गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का सेशन काफ़ी ब्रीफ होने वाला है बट इट्स गोना बी एन इंटरेस्टिंग सेशन क्योंकि ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू आई थिंक काफ़ी टाइम बाद मैंने देखा है न्यूज़पेपर में। तो दिस आर्टिकल इज़ फ्रॉम बिजनेस स्टैंडर्ड डेटेड 13th जुलाई 2026। एम एस श्रीराम ही इज़ द ऑथर ऑफ दिस आर्टिकल। Now, this author is a professor in IIM Bangalore. Therefore, the credibility is high enough. So I think we can take his word for it, and it also very logical article that he's talked about here. The topic that he's touched upon is very relevant, especially for RBI, SEBI, and NABARD candidates, regulatory body candidates. Even from bankers, GD वगैरह में पूछा जा सकता है. What is the topic? The topic is pending innovation in white label savings. Now, what do we mean by white label savings? Just like white label ATMs expanded the scope of ATMs in the country. अब आप किसी भी ATM में जाके किसी भी बैंक का कार्ड लगा के पैसा विड्रॉ कर सकते हो. Similarly, that kind of expansion in the savings system in India is still pending. It's still missing. यूपीआई से हमने पेमेंट्स में इनोवेट कर दिया कि आपके पास पैसा है तो आप खर्च कर सकते हो. बट हाउ डू यू सेव मोर? हाउ डज द पुअर सेव मोर? उसके उसके अंदर कोई मेजर रिफॉर्म आया नहीं है. एंड दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग टू टॉक अबाउट एंड टू थिंक अबाउट ऑल्सो, राइट? बिकॉज गरीबों के बारे में कोई नहीं सोचता, नॉर्मल सी बात है. बट यहाँ पर when they are talking about savings, they're specifically focusing on the poor because the poor is the one who needs savings the most, because that is the only way that he can get out of his poverty. गरीबी से निकलना है तो या तो एजुकेशन या फिर सेविंग्स या फिर दोनों, ये दोनों से ही काम बनता है. एंड सेविंग्स इज ग्रॉसली मिसिंग और अपॉर्चुनिटी टू सेव इज ग्रॉसली मिसिंग. अभी भी बहुत सारे फ्रॉड्स होते हैं गरीब लोगों के साथ इन द फॉर्म ऑफ चिट चिट फंड, पॉन्जी स्कीम्स, कमिटीज़ बनाते हैं. ये सब चीज़ों के थ्रू काफ़ी स्कैम्स होते हैं बिकॉज कोई एक ऑफिशियल फॉर्मल प्रॉपर इजी इनफ चैनल नहीं है जैसे कि यूपीआई है. दैट इज़ द जिस्ट ऑफ दिस एंटायर आर्टिकल, बट ही गोज डीपर इन टू इट एंड दैट इज़ वॉट आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट. मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा. तो आई थिंक द टॉपिक इज क्लियर टू यू, ऑल ऑफ यू बाय नाउ. ये क्वेश्चन इंटरव्यू में भी आ सकता है, फेज 2 में भी आ सकता है, आंसर राइटिंग में. तो इट हैज़ अ लॉट ऑफ स्कोप. नाउ द क्वेश्चन वाज पेंडिंग इनोवेशंस इन वाइट लेबल सेविंग्स एंड अ फर्दर क्वेश्चन बियॉन्ड दैट इज व्हाई इज दिस इनोवेशन पेंडिंग? अभी तक क्यों रिफॉर्म नहीं हुआ है? क्यों ये इनोवेशन यूपीआई वगैरह के इनोवेशन हो चुके बट क्यों आरबीआई भी या कोई और रेगुलेटरी बॉडी या फिर बैंक्स themselves, why are they not interested in reforming the savings system in India? There are four major reasons जो इन्होंने पकड़े हैं. Of course there will be lot more reasons but इन्होंने four major reasons पकड़े हैं. सबसे पहला रीज़न है द डिफरेंस बिटवीन द मिथ एंड द रियलिटी. अभी अकॉर्डिंग टू द ऑथर, द मिथ इज दैट द पुअर कैन नॉट सेव जस्ट बिकॉज दे आर पुअर. गरीब हैं, सेव नहीं कर सकते, तो उनके पीछे भागने का कोई फ़ायदा नहीं है, यू विल बी लूजिंग मनी. बट द रियलिटी इज़ डिफरेंट. द रियलिटी इन द फॉर्म ऑफ हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड ऑल्सो एंटायर वर्ल्ड शोज समथिंग कंप्लीटली डिफरेंट. बहुत सारी कमिटीज़ के फॉर्म में पॉन्जी स्कीम्स होती हैं, चिट फंड स्कैम्स कितने सारे हुए हैं इंडिया में. सबसे बड़ा स्कैम सहारा स्कैम व्हिच वाज इन एनबीएफसी. ये दिखाता है दैट द पुअर हैव एन एपेटाइट टू सेव. एपेटाइट है और लोग उन तक पहुंच के काफ़ी अच्छा कर भी पाए हैं. व्हेन दीज पीपल कुड नॉट कन्वर्ट दैट इनटू टू मच मनी और लॉट ऑफ मनी, दैट इज व्हेन दे कन्वर्टेड इनटू स्कैम्स. आपके पास बहुत सारे लाखों गरीबों का करोड़ों रुपया आ गया, बट यू डोंट नो हाउ टू convert it into a real business where it can make crores for you. आपके लिए वो बहुत पैसा बना सके, आपकी कंपनी को बहुत पैसा दे सके, that they could not decode. Because of that, they ultimately, these kind of schemes ultimately turned into scams. So the reality is that poor have an appetite to save. They just need a more innovative system, a more innovative tool through which there is a win-win situation. They can also save, एंड जो भी कंपनी उनको सेव करा रही है दैट कैन ऑल्सो मेक प्रॉफिट्स.
ठीक है ना? तो एस और पी दोनों साथ में आ जाएँगे तो ऑटोमैटिकली अ, दिस इनोवेशन विल ऑटोमैटिकली स्टार्ट हैपनिंग। The second point that the author talked about was a need for regulatory relaxation. सेविंग्स में क्या होता है एंड देयर इज़ अ जेन्युइन रीज़न बिहाइंड इट, ऐसा नहीं है कि द रेगुलेटर्स हैव नॉट बीन लुकिंग एट इट, देयर इज़ अ जेन्युइन रीज़न बिहाइंड इट बट दे कैन बी मोर इनोवेटिव गोइंग फॉरवर्ड फ्रॉम टुडे। इन सेविंग्स ही सेज दैट इन सेविंग्स द रिस्क ऑफ डिफ़ॉल्ट इज़ बोर्न बाय द कस्टमर। क्यों? क्योंकि अगर बोरोवर या फिर सेवर या फिर in this case the bank, if it doesn't pay back, then who is going to lose? The saver is going to lose, right? The person who's saving is going to lose. So the risk of default is borne by the customer in this case. Borrowings में उल्टा होता है. The risk of default is borne by the bank. That is why the regulator is not too concerned. क्योंकि लूज करेगा तो बैंक लूज करेगा, कस्टमर नहीं लूज करेगा. The first priority of regulator is customer. So therefore, in the case of loans, the regulator is also a little relaxed कि हाँ ठीक है, तुम्हें इनोवेट करना है करो, नया प्रोडक्ट निकालना है निकालो, बिकॉज अल्टीमेटली यू आर टेकिंग द फाइनेंशियल रिस्क। बट सेविंग्स में बिल्कुल उल्टा हो जाता है। Therefore, the regulator has to be cautious in allowing experiments with saving products. वो बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंटेशन अलाउ नहीं कर सकता, because they know that if that experiment goes wrong, the saver is going to lose a big chunk of money. The entire market can also lose trust and then collapse if something like that happens. The third reason of these pending reforms is volatile cash flows. अब जो गरीब लोग सेव करते हैं उनके कैश फ्लोज काफ़ी वॉलेटाइल होते हैं। दैट इज़ द नेचर ऑफ दीज काइंड ऑफ सेविंग्स। इरेगुलर होते हैं, कभी एकदम से बहुत सारा आ गया, फिर एकदम से सूखा पड़ गया, बहुत टाइम तक कुछ भी नहीं है। सेम टाइम एट ऑफ एवरी मंथ दे कांट सेव, है ना? तो वॉलेटिलिटी इन टर्म्स ऑफ टाइम ऑफ द मंथ भी वो बहुत ज़्यादा होता है। नाउ बैंक्स नॉर्मली डोंट लाइक, बिकॉज़ उसके लिए बहुत ज़्यादा डीप कैश मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है, ऑन द ग्राउंड कैश मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है। They are not interested in that kind of relationship with the customer, and they're not interested in that complex cash management. They would rather focus on other aspects to generate more business, because ultimately banks are also businesses. तो उनको बिजनेस करना है, प्रॉफिट बनाना है, तो वो ऐसे एरियाज पे फोकस करते हैं जहाँ पे उनका मैनेजमेंट मिनिमाइज हो सके, उनका काम मिनिमाइज हो सके, ऑटोमेट हो सके, एंड देन दे कैन इंक्रीज देयर प्रॉफिट्स एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दैट. So this is a nature problem, a problem with the nature of these kind of cash flows. They're more volatile, they're more irregular, and automatically that throws bank away or pushes bank away from these kinds of cash flows, these kinds of savings. The fourth reason that the author brings out is high cost of small ticket transactions. अभी देखो यूपीआई में तो the cost of transaction is now being borne by NPCI. ये तो यहाँ पे सरकार बेयर कर रही है सारी कॉस्ट, बट अल्टीमेटली समबडी विल हैव टू पे, दे कांट कीप बेयरिंग द कॉस्ट फॉर एवर। दे हैव बीन डूइंग इट सो फार, और डिस्कशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है पिछले 2 साल में कि ये कॉस्ट को ट्रांसफ़र किया जाए कस्टमर को या फिर बैंक्स को, बिकॉज वी कांट बी कीप बेयरिंग द कॉस्ट मोर देन 2000 करोड़ एवरी ईयर। सिमिलरली इन बैंक्स, बैंक्स के जितने भी टूल्स होते हैं उनमें कोई ना कोई ट्रांज़ैक्शन कॉस्ट होती है, एटीएम में भी ट्रांज़ैक्शन कॉस्ट होती है। पहले 4 में नहीं है, पर मंथ 4 आर फ्री, बियॉन्ड दैट ₹20 पर ट्रांज़ैक्शन। तो एवरी ट्रांज़ैक्शन हैज़ अ कॉस्ट, और जब स्मॉल टिकट ट्रांज़ैक्शन होती है, तो उसकी कॉस्ट एज़ अ प्रोपोर्शन बहुत बढ़ जाती है। कोई बैंक में आया या एटीएम में आया, उसने सेव करना है, वो हर लेट्स से हर 5 दिन में आके ₹100 सेव कर रहा है। अ पुअर पर्सन, ही इज़ सेविंग ₹100 एवरी 5 डेज़, because he doesn't want to lose that money, he wants to save that money, he comes to the ATM and he pushes that money into the bank. तो वो हर 5 दिन में एक ट्रांज़ैक्शन कर रहा है। बियॉन्ड फ 4 ट्रांज़ैक्शंस लेट्स से द बैंक सेज़ हम हम तो ₹5 ₹10 ना ट्रांज़ैक्शन फ़ी लगाएँगे। तो गरीब आदमी के लिए तो बहुत ज़्यादा है ना कि वो ₹100 सेव कर रहा था, उसका 10% ₹10 उसका चला गया। वो सेव करके क्या ही कमाएगा, उसका 10% तो यहीं चला गया। So there is very high cost in the form of proportion.
in small ticket transactions. और these costs cannot be passed on to the customer, है ना? या तो वो कस्टमर को डायरेक्टली पास ऑन करेगा, जैसे मैंने बोला ₹10 आपने ट्रांज़ैक्शन फ़ी लगा दी, उसमें तो फ़ेल हो जाएगा सिस्टम। बट इफ इट इज़ पास्ड ऑन टू द कस्टमर इन द फॉर्म ऑफ लोअर इंटरेस्ट, कि अगर आप हर 5 दिन में ₹100 सेव करोगे, आपको मैं 6% की जगह 3% दूँगा। दैट इज़ ऑल्सो नॉट पॉसिबल बिकॉज़ देयर आर रेगुलेटरी compliances to be followed. Banks can't discriminate between the poor and the rich when they are giving them interest rate on their savings. वो डिस्क्रिमिनेशन भी अलाउड नहीं है, नॉर्मल सी बात है, अलाउड नहीं भी होना चाहिए। तो बिकॉज़ इट इज़ और इट कैन नॉट बी पास्ड ऑन टू द कस्टमर, तो बैंक्स बोलते हैं यार इसको ड्रॉप कर देते हैं रादर देन ट्राइंग टू गो अराउंड इट, ट्राई टू फाइंड अ सॉल्यूशन बिकॉज़ इट इज़ टू डिफिकल्ट अ प्रॉब्लम, टू कॉम्प्लेक्स अ प्रॉब्लम, और इसका सॉल्यूशन हमें शायद उतना पैसा या उतना बिज़नेस या उतना प्रॉफिट नहीं दे पाएगा। देयरफॉर दे आल्सो डिसाइड टू ड्रॉप इट। So these are the four major reasons of pendicity of these reforms, कि ये रिफॉर्म्स अभी तक क्यों नहीं हो पाए हैं, क्योंकि स्मॉल टिकट ट्रांजैक्शंस की कॉस्ट ज़्यादा होती है, कैश फ्लोज सेविंग्स जो लोगों की हैं, गरीब लोगों की, वो काफ़ी वॉलेटाइल हैं, रेगुलेटर इज ऑल्सो टू कॉशियस अबाउट इट फॉर जेन्युइन रीजंस, एंड देन देर इज अ कॉमन myth in the market, common myth in the system, economic system, that the poor can't save, but the reality is different. Because of these four major reasons, the reforms have not been carried out yet. They're still pending. Although RBI did try to come out with reforms in the form of payment bank, जो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, उन्होंने पेमेंट बैंक्स के थ्रू ट्राई तो किया था, बट वो भी फेल हो गया. Let's see in the future if RBI, if Reserve Bank Innovation Hub, or if NPCI can come out with some kind of reform, some kind of innovation in the area of savings for the poor as well. There's an opportunity here. Maybe some NBFC, some kind of institution will try and catch this opportunity, utilize this opportunity. Maybe people amongst you जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, वो शायद कल को कुछ बिजनेस बनाएंगे इस अपॉर्चुनिटी, इस गैप को फिल करने के लिए. But this is what the author has talked about. It's a very good topic, something that can be asked in interview in phase 2 also, something I believe that gives you a very good perspective on banking and finance जो हम लोग normally नहीं ले पाते हैं. That's all from my side. If you like this session, do not forget to subscribe to my channel. Make sure that you download the PDF of this as well. The entire free course on editorial 247 is available in the description. उसको use करें. आज तक जितनी भी editorial classes हुई हैं, all the classes PDFs are available at that one location. It's going to be very useful for all of you. Keep studying hard. Have a nice day. All the best.